ชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังสำนวนไทยๆเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องสู้สู้คนละแบบเราก็สู้แบบคนมีบุญอีกประเภทหนึ่งก็สู้อีกแบบหนึ่งสู้แบบคนมีบาปแต่การสู้ของพวกเราถือว่าเป็นมงคลอย่างเรามาสู้ด้วยการปฏิบัติธรรมนะทนฟังธรรมทนนั่งสมาธิทนต่อการเจริญภาวนาทนได้หลายอย่างนะความอดทนลักษณะนี้ถือว่าเป็นความดีอาจจะว่าเป็นมงคลการฟังธรรมช่วงนี้เราจัดปฏิบัติเราก็ได้สัมผัสกับธรรมะจากครูบาอาจารย์ก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตจิตใจของพวกเรา สมกับคำที่ได้กล่าวเบื้องต้นว่ากาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมัง จริงๆมันก็มีหลายข้อที่เราได้ปฏิบัติซึ่งล้วนแต่มันเป็นมงคลแก่ชีวิตนะเริ่มต้นตั้งแต่ คารโวจะนิวาโตจะสันตุถีกัจจตัญญูตากาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมังนี่เป็นประโยคเต็มๆโดยความสมบูรณ์เราได้แสดงออกซึ่งความคารวะความเคารพความอ่อนน้อมซึ่งถือว่าเป็นมงคลความดีทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าเป็นมงคลแล้วเรายังมีสิ่งที่เป็นมงคลอีก ขันติจะโสวัจจัสสตาสมนานันจะทัสสนังกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคลมุตตมังนี่เรามากันได้ทำเยอะแยะมากมายเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลต่อชีวิตของเราเนี่ยความอดทนซึ่งเป็นธรรมะ ที่สำคัญ เนี่ยสร้างพลังความแข็งแกร่งให้แก่จิตใจเนี่ยเราก็ได้กระทำ ความอดทนเรียกว่าขันติการแสดงออกซึ่งความน่ารักความเรียบร้อยความดีงามทุกคนมีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสเรียกว่าโจวัสสตา โสวัจจัสสตาบุคคล คือเป็นคนที่น่ารักเนี่ยคันติโสรจะ เป็นธรรมอันงามให้เกิดความงามเนี่ยดังนั้นเราทนต่อ การสร้างคุณงามความดีโดยวิธีใดก็ตามท่านจัดว่าเป็นมงคลเป็นความดีงามเนี่ยและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น กาเลนะธรรมสากัจฉาเนี่ยการได้มีโอกาสได้สนทนาธรรม ได้ศึกษาธรรมได้สนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์ในการปฏิบัติกับครูบาอาจารย์อันนี้เป็นมงคลยิ่งเนี่ยเพราะยากที่จะได้สัมผัสลักษณะนี้ โดยเฉพาะสัมผัสกับผู้ที่
มีการผ่านประสบการณ์มานะให้ความรู้ให้สติปัญญาแก่เราเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำเอาสิ่งเหล่านั้นน่ะไปปรับปรุงพัฒนาในการดำเนินชีวิตของเราให้ถูกต้องดีงาม Luang Por Jundee started his Dhamma talk with a little Thai saying, life is a struggle or a constant fight, and it's our enemies that give us the potion or the medicine to endure this fight. So having been born, all of us have to struggle and have to work with this fight of life. And some people are born with a lot of punya, good merit from the past, and some face the struggle of life with a lot of bapaka, like bad qualities. But generally, just simply to be exposed to this struggle, one can say is already something auspicious or promising, because we see it as a practice. We fight or like we struggle with life as a practice. We endure the struggles during our meditations through patience, endurance, in order to develop auspicious qualities. And even just simply exchanging thoughts about the Dhamma or listening to the Dhamma is what the Buddha called very auspicious, mangala, for a whole life. This is something that one can only rarely get the opportunity to. So Luang Por Jundee quoted the verse from the Mangala Sutta at the very beginning of his talk, Kalena Dhamma Savanang Itam Mangala Muttamang. To hear the Dhamma from time to time is one of the highest auspicious things. So actually there are many points supportive of the practice that are pointed out in the Mangala Sutta as auspicious. For example, Karaja Nivad Sati Jakata Kalina Tamasavan. Mangala Muttamang is the whole verse about that leads to this line of listening to the Dhamma at the right time. It talks about being somebody who fully shows respect and shows humbleness, and is content and easy to look after, and has gratitude for good things. This is like something that the Buddha pointed out as a very auspicious quality that supports the practice. And in the next verse, the Buddha mentions Kanti Jasovacha Sata Samanana Jadasanang Kalina Dhamma Savanang Kalina Dhamma Sakacha Itamangala Muttamang. And the last verse is like coming together in the Dhamma, and exchanging thoughts of Dhamma is very auspicious. The mentioning of Kanti is coupled together with the quality of Sovacha Sata, which means like a meekness, neatness, or a very beautifying quality together with Kanti. The Kanti and Soraja are two qualities that the Buddha mentioned in another verse, make up for a beautiful appearance. They are beautifying Dhammas. And Luang Por Jundee says, like, it is really a beautiful quality to be patient and to be enduring, or the word to endure or to be patient is something that is very
much building up strength in our heart, and whenever we express this strength in our heart, we become somebody who is endearing and very neat and lovable to look at. So this is like, these are all very auspicious qualities that the Buddha pointed out in the Mangala Sutta. And the main one to recollect today is that the Kalina Dhammasakaccha, to be able to discuss the Dhamma from time to time, or to have time for discussing Dhamma, exchanging and asking about the practice with teachers, elder monks. This is a very precious opportunity, and to be able to benefit from the experiences of the ones that have passed practice in long term already, and to receive some knowledge, some sati, mindfulness and wisdom, sati panya from them, helps us to develop our lives in a nice and beautiful way, in a way that's auspicious. लुंग पोर जुंदी ने अपना प्रवचन शुरू किया ये बता के कि सामान्यतः जीवन एक स्ट्रगल ही रहता है, और जो कठिनाइयाँ हैं, जो दुविधाएं हैं, वो हमको एक तरह से इस स्ट्रगल में आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाती हैं। सभी को कुछ न कुछ स्ट्रगल करना ही पड़ता है। कई लोग जीवन में पुराने जन्मों के पुण्य लेके आते हैं, तो उनके जीवन की परिस्थितियाँ अच्छी रहती हैं। कुछ लोग ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, ज़्यादा कठिनाई होती है जीवन में। तो ये जो कठिनाइयाँ आती हैं, ये एक तरह से हमारे तो जो हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनको किस तरह से हम हैंडल करें, किस तरह से उनका सामना करें, तो उसके बारे में जो धर्म का समय समय पर धर्म के बारे में सुनना, भगवान की शिक्षा के बारे में सुनना काफ़ी मददगार होता है। और तो लुंग पोर ने जो मंगल सूत्र है उसके गाथाएं पढ़ के सुनाई थी, जिसमें एक बात आती है, कालेन धम्म सवनम एतंग मंगलम उत्तमम। समय समय पे धर्म का श्रवण करना बहुत उत्तम मंगल है, हमारे लिए कल्याणकारी है। और कई भी इस मंगल सूत्र में कई सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी साधना को अच्छी तरह सपोर्ट करती हैं, उसको मदद कर सकती हैं। इसी गाथा के पहले की जो 2 लाइनें हैं, गार्वोच निवातोच संतुष्टि च स्कतुन्यता। तो गार्व मतलब वो बड़ों का आदर करते हैं, गौरव करते हैं, और एक हम्बलनेस है, एक अहंकार की कमी है, एक संतुष्टि का भाव है, कृतज्ञता का भाव है। तो ये सब जो क्वालिटीज़ बताई गई हैं, ये हमारी साधना में मदद करती हैं, हमको सपोर्ट करती हैं कि हम जीवन की कठिनाइयों को सामना कर सकें। उसके आगे जो अगली लाइन है, कालेन धम्म साकच्छा एतम मंगलम उत्तमम। समय समय पे धर्म की चर्चा करना भी बहुत उत्तम मंगल है, उससे बहुत लाभ होता है। तो इनमें जो खांति का और सोवचा सत्ता, जैसे हमने इसके अंदर इस वाक्य से पहले जो बात आती है, खंती च सोवचा सत्ता समनानं च दर्शन कालेन धम्म साकच्छा एतंग मंगलम उत्तमम। खंती मतलब जो एंड्योरेंस है, फोरबियरेंस है, एक शांति का भाव है, और सहज रूप से सीखने का भाव है। ये दोनों एक शुद्ध चित्त की चेतनाएं हैं, और इसको अभ्यास करने से, इनका पालन करने से, इनको कल्टीवेट करने से हमारे चित्त में शक्ति बढ़ती है कि वो
उत्तमता की ओर, अच्छाई की ओर बढ़ सके। और जो काले न धम्म साक अच्छा का अर्थ है कि समय समय पे धर्म की चर्चा करना, उसको समझना, खास तौर पे जो अपने से बड़े हैं, जो टीचर्स हैं, जिन्होंने कई वर्षों तक अभ्यास किया है, जैसे कि यहाँ पे जो लोग आदरणीय भिक्षु लोग आए हुए हैं, कई दशकों से अभ्यास कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि अवसर है कि हम उनसे सीखें, धर्म चर्चा करें और सीखें।เราให้เวลาหรือว่าใช้เวลาไปกับโลกเสียมากเนี่ยวันเราทุ่มเทให้กับโลกโอกาสที่จะหันมาทางธรรมมันน้อยฉะนั้นการที่เราได้มาปฏิบัติได้มาฟังธรรมท่านจึงถือว่าเป็นมงคลถ้าเราลองพิจารณาถึงการดำเนินชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นเช้ามามันก็เป็นเรื่องโลกทั้งนั้นเลยเรื่องการดิ้นรนแสวงหาเพื่อความเป็นอยู่ความสุขที่ต้องการก็เป็นความสุขอย่างโลกความสุขที่เรียกว่าอิงด้วยอามิตรหรืออิงด้วยวัตถุแต่เราก็แข่งขันกันทั้งชีวิตและทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจถ้าเราแข่งขันกันเพื่อได้มาซึ่งวัตถุคิดว่าวัตถุมันจะให้ความสุขแล้วมีใครได้ความสุขเต็มตามความประสงค์บ้างดูในชีวิตแต่ละวันของเราตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาจนถึงเย็นโอกาสที่เราจะหันมาสู่ธรรมะหรือหันมาสู่ความสุขที่เป็นความสงบเย็นทางด้านจิตใจมีกี่คนที่มีความรู้สึกลักษณะนี้ฉะนั้นชีวิตของเราจึงหมกมุ่นอยู่กับโลกที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่ามันเป็นโลกธรรมถ้าเป็นสุขที่เราแสวงหาหรือแข่งขันกันก็เป็นความสุขที่อิงโลกธรรมะมันไม่พ้นไปจากโลกธรรมดังนั้นความสุขที่ได้มามันก็ไม่ใช่ความสุขจะเรียกว่าสุขก็ได้แต่ในความหมายของพระเถระอย่างหลวงพ่อพุทธทาสนะจะเรียกสุขก็ได้แต่เป็นสุขร้อนมันไม่ใช่สุขเย็นสุขร้อนในความหมายของท่านก็คือมันสุขที่อิงอามิตรอิงวัตถุซึ่งมันตกอยู่ในโลกธรรมคือมันมีสุขมีทุกข์อาตมานี้เทศมาหลายครั้งหลายคราก็บอกญาติโยมมาหลายครั้งหลายคราว่าเราไม่เข้าใจความหมายของความสุขเราก็เลยแข่งขันกันหาความสุขมันก็เลยไม่สงบดังนั้นความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้อิงวัตถุแต่มันอิงอาศัยความสงบฉะนั้นการที่เราได้ปลีกตัวมาออกจากโลกที่เขาบอกว่าเป็นความสุขเพลิดเพลินสนุกสนานแต่เราก็หาความสงบได้เราจะหันมาสู่ธรรมมาทำความสงบใจมาเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดความสุขอันหนึ่งซึ่งมันเรียกว่าแหวกแนวออกมาจากความสุขที่อิงอามิตรเข้ามาสู่ความสงบจึงเรียกว่าค
ความสุขที่จะพึงได้จะพึงเป็นน่าจะเป็นความสงบมากกว่าเนี่ยความสุขเกิดจากความสงบใช้คำนี้ดีกว่าเนี่ยถ้าไม่สงบไม่สุขมันเป็นความทุกข์แต่เราเอาชื่อมันมาเรียกเฉยๆเนี่ยความเพลิดเพลินความสนุกสนานความรื่นเริงต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าสุขแต่มันสุขอาศัยอามิตรอาศัยวัตถุมันไม่สงบเลยเนี่ยดังนั้นเมื่อไม่สงบมันก็ไม่ใช่ความสุขมันเป็นความเพลิดเพลินเนี่ยเพลิดเพลินที่ในภาษาบาลีท่านเรียกเลยนะนันทิราคะสากตาเนี่ยเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆแต่เราให้ความหมายว่าเป็นความสุขเราก็หลงแข่งขันกันเพื่อจะหาเอาความสุขอันนั้นยิ่งไขว่คว้าหาเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เจอเท่านั้นเพราะมันไม่สงบไงความสุขที่แท้จริงมันจึงเป็นความสงบจึงถือว่าเป็นมงคลที่เราได้มาทำความดีได้มาปฏิบัติได้มาเจริญสมาธิภาวนาได้มาฟังธรรมได้มาสนทนาธรรมจึงเป็นสิ่งที่ยากที่จะกระทำอย่างนี้ได้จึงถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิต When we think about how much time we give to worldly things every day, we understand how the Buddha comes to say it is most auspicious to turn towards the Dhamma and practice the Dhamma and listen to the Dhamma. When we think about how much we rely on this constant search for happiness in the world, then how much energy we invest and how much effort and how much competitiveness there is in this struggle over everything in our daily life. And we see the value of really turning towards the Dhamma, struggle to cover our daily costs, our job, our material needs and the things that we have to cover every day. It takes a lot of effort. And this is not even mentioning that we have to compete to catch up with others. And so from morning when we get up to the evening, many times we're doing things that aren't really useful. The Buddha called them loka dhamma. We're caught within the worldly dhammas, and the happiness that we can derive from those kind of activities is always a worldly happiness. It's not the real happiness, and it's happiness that arises on these qualities that are based in the material world. And in an idiom of Ajahn Buddhadasa, it's a hot happiness. It's not a cool, soothing happiness that one derives from practice. And there's like the term called lokamisa, like it's material gains of the world that don't really provide us the sustainable, peaceful happiness that we can derive from the Dhamma practice. So when we come together to practice the Dhamma, it is truly, genuinely on a different level auspicious, much other than when we are involved in finding certain things to do or certain entertaining, fun, delightful activities out in the world. The Buddha called it, these are nantiraka sahakata, they're combined with like delighting in passions.
usually in our worldly activities. So, and these don't feel peaceful. And Luang Por Jundee emphasizes that actually the real happiness, the real sukha that we're looking for has to feel peaceful. It is, the real happiness is, we can say, peace. So in this way we can understand that the Buddha really said it's the highest blessing to be able to practice the Dhamma. आगे आदरणीय बंते जी ने कहा कि जब हम सोचते हैं कि हम कितना समय सांसारिक क्रियाकलापों में लगाते हैं, तो ये हमें बात तब समझ में आती है कि क्यों भगवान ये कह रहे हैं कि धर्म का श्रवण और धर्म की चर्चा और धर्म का अभ्यास करना एक बहुत उत्तम मंगल है। सामान्यतः हम संसार के अंदर ही सुख की तलाश करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और बहुत एफर्ट करना पड़ता है, बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने नौकरी के लिए, जॉब के लिए, वहाँ पे बने रहने के लिए, फिर कंपटीशन को हैंडल करने के लिए। तो उस सब को समझते हुए, उस स्ट्रगल को देखते हुए हमें समझ में आता है कि धर्म की जो भगवान की शिक्षा है उसका क्या वैल्यू है। सामान्यतः हम एक लोक धर्म में ही फंसे रहते हैं, जो 8 लोक धर्म भगवान ने बताए हैं, और सुबह से शाम तक उसी चक्कर में लगे रहते हैं। उनसे भी एक सांसारिक सुख मिलता है, लेकिन जैसे अजान बुद्धदासा ने कहा, वो सांसारिक सुख जो है वो शांति प्रदान करने वाला नहीं है, वो अशांत करने वाला सुख है। वो कहते थे उसको हॉट हैप्पीनेस। तो वो सचमुच में हमको मटेरियल गेन से जो सुख मिलता है वो निरामिष सुख नहीं है, सामिष सुख है। तो जो धर्म का अभ्यास करते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं, धर्म को समझते हैं, उससे एक वास्तविक सुख की अनुभूति होती है, जो कि चित्त को शांत करती है। और भगवान बताते हैं कि जो सांसारिक सुख है उसको भगवान ने नंदी राग सहगता के रूप में परिभाषित किया है कि जो सुख हमारे को आनंद जो मिलता है राग के कारण और उसके साथ चलता है, तो राग के कारण साथ से चलने वाला सुख जो है कभी भी शांति प्रदायक नहीं हो सकता, वो सच्चा सुख नहीं हो सकता। उससे सच्चे सुख के लिए, शांति महसूस करने के लिए, इसीलिए धर्म के अनुसार जीवन जीना आवश्यक है। इसीलिए भगवान बार बार कहते हैं कि उत्तम मंगल यही है कि हम धर्म का पालन कर सकें, और उसके लिए धर्म का श्रवण भी बहुत आवश्यक है। ความสงบเป็นสิ่งที่แทบทุกคนต้องการแต่เราไม่รู้ว่าความสงบนั้นเป็นความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขในความรู้สึกหรือความต้องการของเราเราจึงหาออกไปนอกทางเพราะสำคัญว่าความสุขนั้นมันจะต้องอาศัยสิ่งโน้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นวัตถุเลยหันหลังให้ความสงบเสียแท้ที่จริงแล้วความสงบแค่กายสงบเท่านั้นมันก็บ่งบอกถึงความสุขแล้วกายสงบกายไม่มีโทษเราจึงเรียกว่าความสงบทางกายวาจาที่ไม่มีโทษเรียกว่าความสงบเกิดขึ้นทางวาจาจิตใจที่ไม่คิดประทุษร้ายก็เรียกว่าความสงบทางใจถ้าความสงบลักษณะนี้เกิดขึ้นนั่นแหละมันจะบ่งบอกถึงความสุขที่เราได้สัมผัส
แล้วก็ได้ข้อเปรียบเทียบกับความสุขที่อิงอามิตรว่าความสุขอันไหนมีคุณค่ามากกว่ากันนะถ้ายิ่งในเรื่องของจิตใจนะก็ยิ่งเป็นส่วนสำคัญนะเราเคยสังเกตความคิดจิตใจของเราไหมนะแต่มาให้ข้อคิดความหมายง่ายๆก็ได้ว่านะคิดมากเรื่องก็มากนะคิดน้อยเรื่องก็น้อยนะไม่คิดก็ไม่มีเรื่องคิดมากก็ทุกข์มากคิดน้อยก็ทุกข์น้อยเนี่ยถ้าไม่คิดมันก็ไม่ต้องทุกข์เนี่ยถ้าเราวกเข้ามาดูจิตใจของเราก็จะเห็นมูลเหตุของมันว่าความสุขที่ท่านบอกว่าเกิดจากความสงบนั้นเราก็จะมองเห็นชัดขึ้นนะอย่างผู้ปฏิบัติภาวนานะหลวงปู่ชาท่านให้ความหมาย2 ข้อนะคือความสงบเกิดจากสมาธิคือมันคิดน้อยเนี่ยคิดเรื่องเดียวเนี่ยที่เราเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานเนี่ยแต่ใช้คำว่าความสงบจิตเนี่ยแค่ความสงบจิตนี้มันก็เป็นความสุขที่พูดกันยากแล้วล่ะบอกยากถ้าใครไม่ได้สัมผัสก็พูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกเนี่ยท่านเรียกว่าความสงบจิตคือไม่ได้ฟุ้งซ่านไม่ได้คิดมากนะจิตมันนิ่งจิตเป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยท่านเรียกว่าความสงบแห่งจิตเนี่ยความสงบอันที่2นะท่านบอกว่าสงบด้วยปัญญาเนี่ยอันนี้สำคัญมากเนี่ยเรามีชีวิตเกี่ยวข้องอยู่กับโลกเนี่ยถ้าเรารู้จักเอาธรรมะไปใช้ในการดำเนินชีวิตหรือฝึกจิตเนี่ยให้เข้าใจเรื่องธรรมะเอาธรรมะมาเป็นอาวุธเป็นธรรมาวุธเนี่ยมาจัดการให้มันเกิดความสงบด้วยปัญญาเนี่ยถ้าสงบด้วยปัญญานี้เราจะมีความสุขได้ตลอดกาลนะอยู่กับโลกแห่งความวุ่นวายเข้าใจโลกมันก็สงบเขาวุ่นวายแต่เราไม่วุ่นวายเนี่ยมันก็สงบเขาร้อนแต่ก็เราไม่ร้อนนะเขาร้อนแต่เราเย็นนี่ท่านเรียกว่ามันสงบด้วยปัญญานะด้วยการรู้ด้วยความเข้าใจสัจธรรมนะมันก็เลยมี2 ลักษณะนั่นว่าความสงบจิตกับสงบด้วยปัญญาเนี่ยจะว่าไปแล้วก็เป็นสิ่งที่คนทั้งหลายก็ต้องการนะแต่มันก็ยากที่จะได้สัมผัสยากที่จะได้พบนะยิ่งคนที่หลงระเริงอยู่กับโลกนะที่ว่าหลงในโลกธรรมนะก็ไม่มีโอกาสได้พบความสงบนะแม้เป็นความสงบที่เรียกว่าสงบจิตก็ไม่มีโอกาสได้สัมผัสนะจึงไม่ต้องกล่าวถึงว่าสงบด้วยปัญญาแต่อันนี้ก็เป็นโชคดีอีกอันหนึ่งที่พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้มาฝึกฝนอบรมจิตใจเนี่ยอย่างน้อยๆมันคิดมากอย่างที่ว่านี่หัดให้มันคิดน้อยๆเนี่ยเอาคิดมากเรื่องมากจริงๆนะไม่จบคิดมากมันก็ปรุงไปมากเพราะมันเป็นสังขารเนี่ยยิ่งคิดมากเรื่องก็มากคุมไม่ได้ก็เป็นประสาทเลยแหละคิดมากถึงขนาดนั้นแหละเนี่ยนั่นคือมันคิดมากจนควบคุมสับสนวุ่นวายควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็เลยเรื่องมากทุกข์ก็มากเนี่ยถ้าคิดน้อยเรื่องก็น้อยหน่อยเนี่ย
อย่างน้อยก็ทุกข์น้อยลงมานะแต่ถ้าช่างหัวมันเถอะภาษาไทยก็เรียกช่างหัวมันช่างหัวมันเถอะเนี่ยคือมันไม่เอาแล้วคือทำให้น้อยลงเนี่ยคือคิดน้อยเนี่ยคิดน้อยทุกน้อยไม่เอาเลยมันก็ไม่ต้องมีเรื่องไม่ต้องทุกข์เนี่ยนั่นเป็นเรื่องสภาวะทางด้านจิตใจที่เราจะต้องมองเข้ามาเนี่ยปราชญ์ท่านใช้คำว่าหัดมองเข้ามาด้านในอย่ามองออกไปข้างนอกนะถ้ามองออกไปข้างนอกเรื่องมันก็มากเนี่ยจิตตสังขารความปรุงแต่งของจิตมันไปเรื่อยไม่มีเบรกเนี่ยเบรกไม่มีย้อนกลับมาไม่ได้มันก็บานปลายไปเรื่อยเนี่ยเหมือนเราตัดยอดไม้กิ่งไม้มันแตกไปเรื่อยนะแต่พวกการสู่จิตใจก็เรื่องมันจะน้อยลงเนี่ยเรื่องทั้งว่ามันเกิดความสงบแห่งไม่สนใจไม่ใส่ใจก็ผ่านไปไม่สนใจแห่งจิตเนี่ยความสงบนี้แหละมันเป็นความสุขที่สำคัญAlthough peace is something that almost everyone wishes for, most people don't really know how to find it and how to develop it. And especially if we have seen that peace has a different dimension when we really practice the Dhamma, then we know that the worldly engagement or the worldly looking for peaceful situations, they are just on a different scale than what we can discover inside. Usually we approach peace in a first approach through the body, or that is peaceful, and the heart that is peaceful. We develop to have the good intentions of having a heart full of harmfulness and non-conflict, but still they don't compare to that kind of happiness that comes from the inside. And we can think about how deep this goes when we take away the idea of thinking, or like the concepts of peace. Say, when one thinks a lot, then we know there's a lot of issues that arise in the mind, a lot of problems. Thinking a lot of problems. Thinking a little bit, few problems, and not thinking at all, then there's no problem. The mind is still, and so we can say that our thinking or ways of relating to the world with the mind in the worldly way cause a lot of suffering. But when we look inside, we see that there is a peace that arises from a mind that stops thinking, and a mind that is one pointed in its efforts of towards peace. Luang Por Chah mainly summarized that there's two ways of a peaceful mind. One that comes from the practice of samadhi, which is like the peaceful mind that stops thinking, where all thoughts mind. So wisdom and to contemplate life in relation to the world, and for developing this kind of second kind of peace, we have to actually struggle with the world. We use the Dhamma to assist us as a weapon with the life. We have to find a Dhamma to not have us become cold. If the world outside is hot,
and people are hot-hearted, hot-minded, we stay cool by using wisdom. So this is peace that's created or generated by reflectiveness, by panya, and in line with the Sajja Dhamma, the truth of the Dhamma, truth of life. And the first way of attaining to peace is very different than the second way, the different qualities. And it does take a lot of experience and effort to realize even the level of peace by samadhi is very difficult to obtain, and many people try. And the second way of attaining to peace by panya is even more complicated, because we have to train ourselves to think, not confuse, and not to have mental issues, not to get our mind into turmoil, or not to have like what you say, even a deranged mind. Say sometimes we just stop thinking about we stop creating issues to this feeling entirely. Say the so what attitude, and when you just say no need, I don't need to get I don't need to argue with this, I don't need to have issues with a certain problem. This is the peace that lets go of the trouble. So the one is constantly in looking inside what's happening in one's own mind, rather than looking at outside conditions. One is turning towards towards the inside, turning towards seeing the citta sankharas, the proliferations of the mind. If there's little citta sankharas, then that's already a very, very good achievement, because many times the citta sankharas, they just don't cease instantly, but they maybe get mellowed down or get less. So in whatever way we look at finding peace, in the way of focusing the mind, or the way of the interaction with the world and being without issues with the world, both of these practices are making it clear to how important it is to work on an attitude of peace and the practice towards peace. บंते जी ने कहा कि हम सब शांति का चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, और ये क्लियर नहीं होता कि किस तरह से मन को सुदृढ़ बनाएं कि वो शांत रह सके। उसके कई आयाम हैं शांति के भी। कुछ हद तक संसार से एंगेजमेंट में भी वैसा अनुभव होता है, और संसार के एंगेजमेंट के दौरान भी हम कोशिश करते हैं कि संसार के साथ सामान्य रिलेशनशिप रखते हुए भी मन में शांति बनी रहे। और वो नाना प्रकार से किया जाता है कि हम शरीर से, वाणी से, कर्म, कोई विचारों से कोई ऐसा कर्म काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों की हानि हो, हमारी वाणी संयम हो, हमारे कर्म संयम हो, तो उससे भी कुछ हद तक, काफ़ी हद तक शांति मिलती है। लेकिन वो भी एक अस्थिर है, क्योंकि वो जो आंतरिक शांति है उससे कंपेयर नहीं की जा सकती। हम सोचते हैं कि शायद बहुत सोचने से, उसके बारे में अध्ययन करने से, समझने से हम अपने दुख से मुक्त हो जाएंगे, मन को शांत कर लेंगे। ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि इस क्लियर होता है धीरे धीरे कि जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ज़्यादा कष्ट होता है। तो फिर मन में ये भाव आता है कि चलो मन को शांत करने के लिए हम सोचना बंद कर देते हैं। तो शांति के, मन को शांत करने के लिए इसलिए दो तरह की विधियां बताई जाती हैं, एक समाधि की, समझ की, और एक प्रज्ञा की, विजडम की। तो जो समझ का भाव का मार्ग है, उसमें चित्त की एकाग्रता इतनी बढ़ाई जाती है कि चित्त की जो थिंकिंग है, जो विचार हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो उससे भी काफ़ी शांति मिलती है। लेकिन वो शांति स्थिर नहीं है, क्योंकि वो परिस्थितियों पर निर्भर है। और जो प्रज्ञा से शांति आती है, वो सचमुच में हमें
जीवन सामान्य जीवन में भी शांति से रहने का एक मार्ग दिखाती है। और जो प्रज्ञा का जो आधार है वो एक तरह से शस्त्र में देता है कि संसार के जो संगतियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे हम जूझ सकें और मन फिर भी अशांत ना हो। तो प्रज्ञा से जो जनित शांति जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। इट इज़ तो लुंग पोर उन्हीं के बारे में बता रहे थे कि हमें प्रयास इसी का करना चाहिए कि प्रज्ञा से जो शांति मिले। हाँ, वो बात भी आवश्यक है। ये बात भी सत्य है कि काफ़ी अनुभव के आधार पे, काफ़ी अभ्यास के आधार पे ऐसा समझ बढ़ती है। लेकिन समाधि में भी बहुत एफर्ट करना पड़ता है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है और हम बाहर की परिस्थितियों पे बहुत निर्भर रहते हैं। पन्या कार्य का जो स्वभाव है वो ये है कि हम परिस्थितियों को जानें और उसमें रिएक्ट ना करें। और उसका मतलब ये नहीं कि एक तरह से एक एटीट्यूड हो कि जो भी हो रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे, उससे उसके ऊपर हमारे पे हावी नहीं होने देंगे। हमें हर परिस्थिति से आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत है। और अगर हम निरंतरता से अंतर में देखते रहें तो हमें मालूम पड़ेगा कि अगर हम ऐसे जिएंगे तो चित्त संखार जो है वो जागेंगे नहीं। और जो चित्त संखार है, जो मन के प्रपंच चलते रहते हैं, वही दुख का काफ़ी कारण बन जाते हैं। तो जितना जितना हम प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होते हैं, चित्त के संखार शमन हो जाते हैं और उससे हमारा मन भी शांत रहता है। और सामाजिक जो जितनी भी संसार की परिस्थितियां हैं, उसके परिस्थितियों के रहते हुए भी हम चित्त में शांति का अनुभव कर सकते हैं।มันมีอีกสำนวนหนึ่ง ได้ยินมาก็เป็นข้อคิดเหมือนกัน เขาบอกว่ายิ่งแสวงหาออกไปเท่าไหร่ยิ่งไม่พบเท่านั้น ยิ่งแสวงหาออกไปข้างนอกยิ่งหาข้างนอกยิ่งไม่พบ นี่ก็น่าคิดนะได้ยินสำนวนนี้ครั้งแรกก็มันเป็นสิ่งที่น่าคิดแล้วมานึกถึงบทพระธรรมคุณที่เรียกว่าโอปนัญญิโกมันก็เป็นความจริงโอปนัญญิโกนี้เป็นสิ่งที่ให้มองเข้ามาด้านในไม่ให้มองออกไปข้างนอกโอปนัญญิโกน้อมเข้ามาข้างในอย่าน้อมออกไปข้างนอกถ้าออกข้างนอกมันยิ่งไกลไปเรื่อยการแสวงหาความสุขของคนทั่วไปมันแสวงหาออกไปข้างนอกแม้จะไปถึงดวงดาวที่ไหนก็ไปเถอะอย่าไปสร้างโลกข้างนอกนอกโลกนี้ไปโลกอื่นมันยิ่งไกลตัวเข้าไปท่านบอกว่ามันยิ่งไม่พบเท่านั้นคือไม่พบความสงบนั่นแหละมันก็คิดไปเรื่อยปรุงไปเรื่อย หรือพูดให้เป็นภาษาธรรมะนึกว่าถูกตัณหามันจูงไปเรื่อยถ้าออกไปข้างนอกถ้าน้อมเข้ามาข้างในมันเป็นการปลดปล่อยจากตัวตัณหาตัณหาไม่มีอำนาจที่จะมาครอบงำหรือครอบคลุมมันดึงเข้ามาเป็นตัวของตัวดึงเข้ามาเป็นโอปนัญญิกธรรมเรียกว่าโอปนัญญิโกน้อมเข้ามา ถ้าน้อมเข้ามามันจะเห็น มันจะเข้ามาสู่จิตภาษาสติปัฏฐานมันจะเห็นทำเราเห็นจิตในจิตถ้าน้อมเข้ามาน้อมออกจากไกลจากจิตก็เลยไม่เห็นจิตเมื่อไม่เห็นจิตก็ควบคุมจิตไม่ได้จิตมันก็ปรุงแต่งไม่มีตัวควบคุมแต่พอน้อมเข้ามาเป็นโอปนัญญิกธรรมน้อมมาเป็นโอปนัญญิโกนี่มันจะเข้ามาสู่หลักของสติมันจะค่อยๆเรียกร้องสติที่อยู่ไกลๆค่อยเข้ามาแต่ก่อนสติมันห่างพอเป็นมีโอปนัญญิโกน้อมเข้ามาสติก็จะค่อยถี่เข้ามา
ท่านจึงเรียกว่าจนเป็นสติปัฏฐานคือมีฐานของสติคือจิตเนี่ยเรียกว่าถ้าจิตเป็นฐานเนี่ยให้สติมันก็จะมองเห็นจิตเนี่ยจึงเรียกว่าเห็นจิตในจิตเนี่ยถ้าเห็นจิตในจิตมันก็เห็นจิตแยกจิตระหว่างอารมณ์กับจิตเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นชัดขึ้นเนี่ยฉะนั้นความปรุงแต่งของจิตก็ดีเนี่ยความสงบเกิดขึ้นจากจิตก็ดีเนี่ยมันก็จะมองเห็นถ้ามองเข้ามาด้านในเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวแปรเนี่ยให้เกิดความสุขหรือเกิดความทุกข์เนี่ยหรือเป็นตัวแปรให้เกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันจะมองเห็นความสงบมองเห็นความสงบเพราะมองเข้ามาด้านในมองเข้ามาทางด้านจิตใจเนี่ยแต่ว่าถ้ามองไปข้างนอกมันก็จะไม่เห็นถึงว่าสำนวนนี้ก็ดีก็ยิ่งแสวงหาออกไปเท่าไหร่ยิ่งไม่พบเท่านั้นเนี่ยลองดูก็ได้โยมถ้าเราปล่อยคิดไปเรื่อยคิดมันก็ฝันหวานไปเรื่อยแหละภาษาไทยก็เรียกว่าฝันหวานฝันหวานมันเพลินเนี่ยก็เรียกว่าฝันหวานเนี่ยมันมีความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินเนี่ยคือมันอยากไปเรื่อยเพลิดเพลินไปเรื่อยเนี่ยเพราะว่ามันชวนให้มันเหมือนของหวานนะก็เรียกว่าฝันหวานแต่ลมๆแรงๆเนี่ยนั่นเป็นลักษณะที่การส่งจิตออกไปข้างนอกเนี่ยแต่ถ้าเอาบทธรรมคุณเข้ามาปุ๊บเนี่ยเป็นโอปานิโกน้อมเข้ามามันถูกต้องเนี่ยสำนวนภาษาชาวบ้านของครูบาอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์หลวงปู่ชาหลวงพ่อชาเราเนี่ย ของหลวงปู่กินนรีหลวงปู่กินนรีนี่เป็นจะเรียกว่าเป็นอาจารย์ที่หลวงพ่อชาเคารพนับถือองค์หนึ่งเนี่ยนอกเหนือหลวงปู่มั่นนะนี่ท่านก็เล่าให้ฟังในเรื่องการภาวนาแบบภาษาชาวบ้านนะท่านบอกว่าภาวนาเพื่อให้เกิดความสงบนั้นมันไม่ยากหรอกเนี่ยแล้วจากวามาหาศอกจากศอกมาหาคืบนะจากคืบมาปุ๊บที่ใจเลยเป็นภาษาชาวบ้านนะภาษาไม่มีศัพท์ไม่มีแสงอะไรหรอกเนี่ยเป็นภาษาชาวบ้านฟังง่ายๆเนี่ยจากหนึ่งวามาหนึ่งศอกจากหนึ่งศอกมาหนึ่งคืบจากหนึ่งคืบมาปุ๊บที่ใจเลยนี่ลงตรงนี้แหละนี่ความสงบมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ถ้าออกไปมันก็ยาวไปเรื่อยแหละจากวามันก็ไปอีกหลายวานะหลายร้อยเมตรละมันยาวไปเรื่อยไกลไปเรื่อยมันไกลมันห่างห่างจากธรรมห่างจากความสงบเนี่ยถึงบอกว่ายิ่งออกไปเท่าไหร่มันยิ่งไม่พบเท่านั้นแต่ถ้าเข้ามานะมันจะเห็นในหลายอย่างละจะเรียกว่าเห็นตัวเห็นตนเห็นตนเห็นคนอื่นนะเห็นเราเห็นเขามันเป็นกระจกที่สะท้อนเข้ามาให้เห็นเงาตนเองเนี่ยถ้าโอปาญิโกนะถ้าออกไปมันมองไม่เห็นมันไม่เห็นเงาตนเองเนี่ยถ้าเห็นเงาตนเองเนี่ยมันก็เห็นชัดแหละอย่างพระพุทธเจ้าท่านอุปมาเหมือนกระจกเงามาส่องเนี่ยถ้าเรามาส่องดูหน้าแล้วเห็นตำหนิตรงไหนมันก็ไม่สบายใจเนี่ยมันก็จะพยายามขจัดตำหนิตรงนั้นออกเนี่ยเมื่อขจัดตำหนิออกจากใบหน้าได้ดีแล้วหน้าตาผ่องใสคนนั้นก็เกิดความสุขมีปีตินี่ชั้นใดนะโอปาญิโกการน้อมเข้ามานี่มันทำให้เราได้มองเห็นปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เนี่ยเราก็จะได้ขจัดฝ้าไฟหรือกิเลสทั้งหลายเนี่ยที่เหมือนอุปมาเหมือนฝ้าไฟเนี่ยขจัดมันออกไปเนี่ยให้เกิดความสว่างเกิดความสงบขึ้นมาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นความสงบแห่งจิตเป็นความสงบแห่งปัญญา Another idiom that Luang Por Jundee was impressed by is a very easy one.
expresses the search for peace quite nicely. It says the more you go outside to search for peace, the less you'll find it. So it's not about an external search to find peace. And when Luang Por Chah first heard about this this translation of what we call Opanaiko, which is in the qualities of the Dhamma that we recite, Dhammakuna, which we translate as leading inwards, Luang Por Jundee was very much touched by this, because it expresses this idea of not taking our search for peace outside, but taking it inside. And whatever planet or whatever home, whatever place we can try to reach or build or develop, it'll always be external and be determined by our cravings or by tanha, by our desires. Whereas when we look inside, we let go of this craving for external things. We let go and come in, revert in, take in, move inside, take things to enter our heart. And this is what is expressed in the Satipatthana when one says about the mind in the mind, seeing the mind in the mind. It's not the mind looking at something external, but it's the mind turning inwards and looking at the mind itself. It's not the mind proliferating about something that takes it outside, but it's a focusing or calling in the mindfulness to go inwards towards the basis of all knowledge, which is the mind. This is why it's called Satipatthana, the basis of mindfulness. And with sati, with mindfulness, you can see the mind, you can see and differentiate between the states of mind, or aramana, the citta aramana, or in Thai they call this arom, which is like something like in between the technical term of the citta aramana, but also like the moods of the mind and the mind. And so this really creates this peace of, that comes from investigating the mind, and with mindfulness in the sense of the Satipatthana Sutta, it does the change from turning the mind inwards rather than turning it outwards, and looking at the mind, looking at the way the mind works. And this could never be done by any external measures, by any external way of sending the mind out to an object or anything outside. That would only lead to what Luang Por Jundee called sweet dreams, something that's interesting and compelling. Like you mentioned before, Nandi Raga, the mind proliferates on something that is persuaded to fantasize and demands more sweetness. So it's like a sweet dream, but nothing that really gives peace. So when we reflect on this idea of opanaiko, leading inwards, taking the Dhamma inwards, or taking the mind inwards, seeing the mind in the mind, then this will bring us a different quality of mindfulness, or of realization of the of peace inside. And Luang Por Jundee mentioned one of the teachers of Ajahn Chah that had a way of expressing this process of taking the mind inwards in a very easy, say kind of like down-to-earth village style. Just simply saying that this teacher is called Luang Por Jundee, and you may have heard is one of the teachers of Ajahn Chah. This teacher of Luang Por Chah is called Luang Por Jundee. He's one of the teachers besides Luang Por Man, Luang Por Chah spent time with and referred to a lot. And he said, like, in our practice, in our bhavana for peace, actually things aren't difficult. Just instead of looking in one arm's length, you just look one forearm's length, and then you take it to the level of the span of a hand, and then you take it all the way into your mind. Say, don't look 100 meters away, but just reduce the distance in which you look.
So this is roughly the way Luang Por Chah described how you take the mind inwards. Don't do it gradually. And so the gist of it is that the Dhamma is not far away, and we shouldn't be far from the Dhamma, and we shouldn't go moving outside, but it's like reflecting on ourselves, or like using our capacity to see ourselves directly, as if we were looking at our image in a mirror, and usually wouldn't be able to see what we are like from the outside. So we wouldn't be able to see our pimples, for example. Ajahn Buddha said, but you have to look into your own face to see that. So take your awareness to look inside, and this will create a new source of peace. लुंग पोर जुंदी ने एक कहा कि एक और जो फ्रेज उनको इस संदर्भ में अच्छा लगता है वो ये है कि जितना आप बाहर जाओगे उतना कम चांस है कि उतनी कम संभावना है कि आप शांति को पा पाओगे, क्योंकि शांति जो है वो बाहर के वस्तुओं में, बाहर की परिस्थितियों में नहीं है, मन के अंदर ही है। जो हम धर्म के गुणों का गायन करते हैं उसमें कहा जाता है एक गुण है धर्म का औपनेयिको, अर्थात वो हमको अंदर की ओर ले जाता है। तो ये इसके ऊपर अगर हम विवेचना करें ठीक से, समझ में आता है कि धर्म की जो हमारी शांति की जो चाह है वो बाहर खोजने से नहीं होगी, अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो ही, उससे ही हमें सच्ची शांति मिल पाएगी। क्योंकि जब भी हम बाहर की ओर देखेंगे और उसमें शांति की कोशिश करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं तृष्णा जुड़ जाएगी, कहीं ना कहीं इच्छाएं जुड़ जाएंगी, और तृष्णा ही जो है हम जानते हैं दुख का कारण है, और उससे हमारा कहीं ना कहीं राग जागता है। तो जितनी जितनी हमारी तृष्णाएं कम होती जाती हैं उतना उतना हम अपने मन की ओर अंतर्मुखी होने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ने भी कहा कि जैसे हम सती पठान में एक उसका जो आयाम है चित्तानुपश्यना में, माइंड मन के अंदर मन को जानना, कि मन के माध्यम से ही देखते हैं कि क्या हो रहा है मन के अंदर से, अपनी सती को प्रतिष्ठित करते हैं मन की कार्यकलापों में कि मन में किस तरह के भाव उठ रहे हैं, किस तरह की राग द्वेष उठ रहे हैं। तो वो जो सती को प्रतिष्ठित करने का, माइंडफुलनेस को प्रतिष्ठित करने का तरीका है, वो भी एक तरह से हमको डिफ्रेंशिएट करने देता है चित्त की अलग अलग स्थितियों में, क्या चित्त के आरम्भन क्या क्या हैं, क्या किस चीज़ को पकड़ा हुआ है। उस तरह से मन की अगर जो हम देखते हैं तो मन उन आरंभों में नहीं फंस के इधर उधर घूमता नहीं है, और मन को इन्वेस्टिगेट करने की क्षमता हमारी बढ़ती है। तो सती पठान में भी हम यही सीखते हैं कि मन को कैसे अंदर ले जाएं, मन के अंदर की जो क्रियाकलाप है उनको कैसे हम ठीक से समझ पाएँ, क्योंकि बाहर ढूंढने से शांति मिलना संभव नहीं है। बाहर तो सिर्फ जैसे पहले भी उन्होंने बताया नंदी राग सहगता वाली बात चलती है, हमेशा हम यहाँ कभी यहाँ खुश हो रहे हैं, कभी वहाँ खुश हो रहे हैं, कभी इस यहाँ पे राग के कारण प्रसन्न हो रहे हैं, और वो सब नश्वर होने के कारण एक तरह से स्वीट ड्रीम जैसे कहते हैं ना, एक हमारे सुनहरे ख्वाब की तरह रहता है, और सचमुच में शांति नहीं मिल पाती। तो लुंग पोर हमें कहते हैं, सुझाव देते हैं कि हमको इस शब्द में, धर्म की जो व्याख्या में शब्द होता है औपनेयिको, उसके ऊपर काफ़ी विचार करना चाहिए, विवेचन करना चाहिए कि किस तरह से ये जो क्वालिटी है चित्त की, ये जो धर्म की, इसको सती के माध्यम से किस तरह से हम प्रतिष्ठित कर सकें। उन्होंने उदाहरण दिया कि अजान चा के जो एक टीचर थे लुंग पोर किनेरी, अजान मुन के वो भी डिसाइपल थे, लेकिन अजान चा उनबी के भी आचार्य थे, तो उनसे सीखने गए थे। तो वो बताते थे कि एक साधारण गांव की जैसी भाषाएं बताते थे कि आप देखना जो है, किस चीज़ को देखना है, आप 100 मीटर की दूरी पे नहीं देखो। एक पहले कहते थे अच्छा एक हाथ की दूरी पे देखो, फिर एक मुष्ट की दूरी पे देखो, फिर कहते अपने अंदर ही देखो क्या हो रहा है। तो जिस दूरी पे हम हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं उसको कम करते जाएं और आखिरकार अंतर्मन में आ जाएंगे, तो हम समझ पाएंगे धर्म जो है वो बहुत दूर नहीं है, वो हमारे अंतर्मन में ही निहित है। अगर हम अपने ऊपर ही विवेचना करें, जिस तरह से कि हम एक शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, रिफ्लेक्शन देखते हैं शीशे के अंदर, उसी तरह से अपने आप को शांति संभल जाएंगी। एक
एक और में बुद्ध दासा का कहते थे कि अगर शरीर पे कुछ पिंपल्स हैं उनको देखना है तो उनको आप बाहर से लोगों से नहीं देख सकते, उसको अपने अंदर शरीर को देखना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो अगर अशांति है तो उसको रिफ्लेक्ट करके देखना पड़ेगा कि कैसी अशांति है और किस तरह से हम उसको दूर कर सकते हैं। ดังนั้นอาตมาจึงขอชักชวนให้เรามาหาความสงบภายในกันเถิดนะอย่ามัวหาความสุขภายนอกกันเลยนะเพราะความสุขภายนอกดังที่กล่าวเบื้องต้นว่าถ้าอิงอาศัยวัตถุอิงอาศัยอามิตรทั้งเนี่ยแต่ถ้าเราในมาหาภายในเนี่ยเราจะพบความสงบเรามองเข้ามาภายในเนี่ยเราจะเห็นมากเห็นน้อยเนี่ยเราจะเห็นหนักเห็นเบาเนี่ยรู้จักมากรู้จักน้อยเนี่ยถ้ามันมากมันยุ่งเราก็จะทำให้มันน้อยลงมาเนี่ยถ้ามันน้อยมันยังยุ่งอยู่ทำน้อยให้มันจนไม่มีเนี่ยถ้ามองเข้ามาด้านในเป็นลักษณะนี้นี่ถ้าหนักรู้ว่าหนักมันก็จะมีวิธีทำให้มันเบาถ้ามองเข้ามาข้างในนะถ้ามองข้างนอกรู้ว่าหนักอยากให้มันเบาแต่มันจะเอามาเพิ่มมันเป็นตัณหานะแต่ถ้ามองเข้ามาข้างในรู้ว่ามันหนักมันจะเก็บออกจนกว่ามันเกิดความเบาขึ้นมานะถึงเบาขนาดไหนมันก็ชื่อว่ามันยังมีอยู่มันหนักอยู่มันก็จะรู้แล้วมันจะพยายามทำให้มันน้อยลงจนไม่แบกนะมันจะเกิดความเบาขึ้นมานั่นแหละมันจะเป็นความสุขความสงบเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติที่รู้จักมองเข้ามาด้านในรู้จักโอปัญญิโกน้อมเข้ามาเนี่ยถ้าเรามองเข้ามาลักษณะนี้เราจะพบความสุขที่ไม่อิงอามิตรที่อาตมาใช้คำว่าสุขอาศัยความสงบซึ่งแต่ว่าทั้งสงบจิตทั้งสงบกิเลสมันจะเห็นอยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้ก็ฝากไว้และต่อไปเราจะได้เปิดโอกาสได้ถามปัญหากัน Okay. So before Luang Por Jundee would like to invite some questions, he'd like to invite us all to look inside and take it really to the heart for peace and not to invest in looking for external happiness. As he pointed out, it's always bound up with material things and always like in external and relying on external conditions that will never be enough. So we look inside, and the more we look inside, whether we look inside a lot or a little depends. Like if we look at heavy things, like we can lighten them and reduce the confusion a little bit. If we have a lot of confusion, then we reduce it a little bit. If we have only little confusion left, then we reduce it to almost no confusion. And we know how to do this internally. We can do this with the power of the mind. And externally it would never cease, but inside we can bring it to cessation, make things that are heavy light, and we know how to reduce the amount of disturbance and confusion by not taking it as heavily and reverting to this sense of peace that only comes from inside, whether it's the peace that comes from wisdom or the peace that comes from the one-pointed mind. Both are ways of looking inside. So I'd like to open it up to some questions. If you have anything interesting to bring up for the Dhamma discussion. Luang Por ने कहा कि
एक समरी के रूप में प्रश्न बुलाने से पहले कि जितना हम अंदर जो देखेंगे जितना उतना ही शांति का अनुभव होगा। बाहर जितना अपने एफर्ट को इन्वेस्ट करेंगे, जितना एफर्ट बाहर करेंगे, सांसारिक वस्तुओं में सुख की तलाश करेंगे तो वो उतना रिलायबल नहीं है। और जितना जितना हम अंदर की ओर देखेंगे, ज़्यादा देखेंगे तो भारी तो ज़्यादा लाभ होगा, कम देखेंगे तो कम लाभ होगा। और इसलिए समरी के रूप में कहा कि तुम्हारी शांति का भाव वन पॉइंटेडनेस से भी आ सकता है, संरक्षण और पन्या से भी आ सकता है, लेकिन हालांकि दोनों में ही हम अंतर्मुखी होकर ही काम करते हैं। तो अब उनको कह रहे हैं कि वो प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, अगर हमें प्रश्न तो पूछें। और जो उन्होंने कहा काले निधम मसाकच्छा, तो धर्म चर्चा वो शुरू हो सकती है। तो प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। So one question came online. So, माइक है? Yeah, I guess. ठीक है। One question came online, so I'll just read the question. How does one differentiate between a regular friend and a Kalyan Mitra? It is an important distinction to make because one comes in touch with all kind of people both within and outside the sangha. One finds that not all people outside the sangha are perfectly bad, nor all the people within the sangha are perfectly good. And I see myself as work in progress, so possibly the distinction. ขอโอกาสหลวงพ่อมีคำถามเรื่องความที่จะแยกออกได้ไหมว่าเรื่องเพื่อนของเราเพื่อนที่เป็นเพื่อนปกติหรือเป็นที่เป็นกัลยาณมิตรจริงมันต่างกันยังไงก็ภายในคณะโยมก็ตามหรือคณะสงฆ์ก็ตามเพราะว่าเรารู้กันอยู่ว่าแม้แต่ภายนอกบางครั้งก็มีคนที่ดีที่น่าจะเป็นเพื่อนที่ดีในแง่หนึ่งได้แล้วก็แม้แต่ในพระสงฆ์ไม่ใช่ว่าดีตลอดคือว่าบางที่เราต้องดูออกได้ว่าใครเป็นกัลยาณมิตรจริงก็ตัวเองก็ถามเพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเพื่อจะโอ้อวดตัวเองก็รู้แต่ว่าอยากจะทราบว่าหลวงพ่อจะแนะนำยังไงเรื่องการแยกย้ายออกว่าใครเป็นกัลยาณมิตรแท้ครับผมก็มีสองลักษณะอันหนึ่งใช้เวลานะใช้เวลาการดูการอยู่ร่วมกันนะถ้าพระสงฆ์นะการที่จะมาอยู่ร่วมกันท่านให้ดูกันก่อนก็ดูความประพฤตินั่นแหละในข้อที่สองก็ดูความประพฤติลักษณะคนดีและไม่ดีแต่ว่าดูวันเดียวมันดูไม่ได้มันคนมีมายาเยอะมีกิเลสมีมายาใช้บางคนใช้เวลา 2-3 วันยังไม่พออยู่กันเป็นเดือนเนี่ยอย่างหลวงพ่อชานี่ใครจะมาอยู่กับท่านเนี่ย ท่านไม่รับง่ายๆเนี่ยบางทีอยู่เป็นเดือน2 เดือนเนี่ยเห็นว่าใช้ได้แล้วถึงรับนี่แล้วความประพฤติมันจะบอก ความประพฤติถ้าในพระสูตรท่านก็มีกล่าวไว้เหมือนกันว่าจะรู้ว่าใครดีควรคบเป็นสัตตบุรุษก็ดูที่ความประพฤตินี่ทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ที่แสดงออกแต่การแสดงออกนั้นถ้ามันแฝงด้วยมายาเนี่ยวันหนึ่ง2 วันมันไม่รู้มันใช้มายาเนี่ยแต่ถ้าดูกันนานๆหลายวันเนี่ยเขาเรียกภาษาไทยเขามีคำหนึ่งก็ว่าสันดานเดิมมันจะออกถึงคุมขนาดไหนมันก็ออกมันเป็นนิสัยของเขาเนี่ยนิสัยของคนไม่ดีเนี่ยถึงมันปิดขนาดไหนเนี่ยมันก็ต้องออกมาเนี่ยในสันดานของมันเนี่ยถ้าเป็นคนดีเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาเนี่ยไม่ใช่หน้าไหว้หลังหลอกอันนั้นมันเป็นมายาเนี่ยฉะนั้นจึงใช้เวลาดูนะใช้เวลาดูนะ
แล้วก็ดูความประพฤติด้วยเนี่ยลักษณะของคนดีก็ได้ทำดีพูดดีคิดดีอันนี้หลักทั่วไปนะทำดีพูดดีคิดดีเนี่ยแต่เวลาเห็นหน้ากันมันก็เอาดีใส่กันนะคนเราแต่ว่าลึกๆมันยังไม่ออกจึงต้องใช้เวลาดู ขอครับLuang Por Jundee mentions time is a very important factor to see whether friends are real friends or real Kalyanamitas and or not. And by observing while one lives together and spending time together, even in the sangha, to see the behavior of the monks over time and many hidden character traits or habits will only show after some time. One day is not enough, 2 days, 3 days. Many times we have this sense of deceiving maya that overrides our real inner character, one can say, and it takes maybe even a month or longer to see where a person's at. Even Luang Por Chah didn't make it very easy to enter the sangha. Sometimes he was observing people for a month or 2 months until they reveal by their actions what they are actually really like. And this is also in the suttas is one of the ways to tell a genuine person, satpurut, by his actions of body, speech, and mind over time, and to see how what he expresses overrides over time the way he or she tries to deceive, and a good person will not just simply bow on the outside and kick behind one's back. That's a Thai expression, but will be genuine, and we can sense this, but we need to put it to a test of time through body, speech, and mind to see the actions of another person. आपने प्रश्न पूछा था कि एक सामान्य मित्र जिसे कहते हैं और एक कल्याण मित्र में कैसे फर्क महसूस किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो संघ में नहीं है तो इस व्यवस्था में नहीं है वो कल्याण मित्र नहीं हो सकते या अच्छे नहीं हैं, और या सब जो संघ में हैं वो सभी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। तो किस तरह से हम पता करें कि ये सच्चा मित्र है या नहीं। तो लुंग पोर ने जवाब दिया कि इसके लिए समय एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। बहुत जल्दी ही कुछ ही समय में मालूम नहीं पड़ता कि कोई मित्र सच्चा मित्र है या नहीं, काफ़ी समय लगता है। कुछ जो हमारे कैरेक्टर के ट्रेट्स होते हैं वो बहुत समय में कभी प्रकट होते हैं, तो इसलिए साथ रहना और लंबे समय तक साथ रहने के बाद ही हमें मालूम पड़ पाता है कि कोई मित्र है या सचमुच में कल्याण मित्र है। इस संदर्भ में वो बताते हैं कि लुंग पोर चाह ने शायद इसी कारण से भिक्षु बनना कोई आसान काम नहीं रखा था। काफ़ी समय के बाद वो कई बार किसी को भिक्षु बनने की अनुमति देते थे। सूत्रों में भी एक सूत्र है सापुरुष सूत्र, जिसमें का उदाहरण भंते जी ने दिया कि उसमें हमेशा यही कहा गया है कि वाणी, काया और चित्त से जो भी हम काम करें उसको हर जो अच्छा पुरुष होगा वो हमेशा अच्छा ही करेगा। तो लंबे समय तक साथ रह के हमें मालूम पड़ पाता है कि पुरुष कोई भी आदमी है हमारा अच्छा मित्र बन सकता है कि नहीं। और थाई में एक, जैसे उन्होंने कहा, थाई भाषा में एक लोकोक्ति है कि वो उचित नहीं है कि जो बाहर से तो आपको प्रणाम करे और वो पीछे से फिर एक धक्का दे दे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो जैसा उसका व्यवहार अंदर हो वैसा ही बाहर हो, तभी हम कह सकते हैं कि वो सच्चा मित्र होगा। หลักที่ปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็มีเหมือนกันนะอาตมาเห็นภาพหนึ่งไม่ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่ภาพวาดนะในสิงคาลมาลสูตรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องที่ปฏิบัตินะในลักษณะมิตรดีมิตรเลวนะหรือเพื่อนที่ดีเพื่อนที่เลวนะถ้าเพื่อนที่ดีเนี่ยนี่ก็ว่าสุขด้วยทุกข์ด้วยเนี่ย
แนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้วนะเป็นลักษณะของคนดีนะเมื่อถึงยามทุกข์ยากนะช่วยเหลือเกินกว่าที่ขอด้วยนั่นเป็นลักษณะของมิตรที่ดีนะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อยู่แล้วนะในขีปฏิบัติมีอยู่ในพระสูตรก็มีเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าขีหิปฏิบัตินะจริงๆสำหรับญาติโยมถ้าดูในขีหิปฏิบัตินี้จะมีครอบคลุมทั้งหมดเลยในข้อปฏิบัติในการดำรงชีวิตอย่างฆราวาสนะถ้ามีเวลาหาดูกันดูมาศึกษาดูนะท่านจะบอกรายละเอียดข้อปฏิบัติระหว่างบิดามารดากับบุตรภรรยาหรือสามีภรรยาครูบาอาจารย์จะมีในนั้นหมดเลยนะซึ่งมีสมบูรณ์แบบในนั้นนะLuang Por Jundee just remember that there is actually very precise description in the Gihipatipata, the layperson's practices outlined in the Sigalaka Sutta in the Digha Nikaya, where the Buddha speaks very clear about the characteristics of a good friend. And a good friend is a friend both in happiness and suffering, both through good and bad times, one would say, and gives good advice in times of need, warns one when one is practicing, when one is prone to heedlessness, and is somebody who supports and helps more than he demands from the friendship. These are things that you can look up in the Sigalaka Sutta, which has a lot of very good descriptions about how the ideal life as a householder would be, like in relation to parents, to your superiors, to your employees, and to your wife and husband and kids, for example. नुपुर जुंदी ने एक और बात ऐड की कि जो सिगाल का सुत्ता है उसमें गृहस्थों के लिए एक तरह से किस तरह का आचरण करना चाहिए उसके बारे में काफ़ी विवरण से डिस्क्रिप्शन है और उसमें अच्छे मित्र की भी बातें आती हैं कि सच्चा मित्र वो है जो दुख सुख में साथ दे, अच्छी एडवाइस दे, और अगर हम गलत काम करने लगें, हम प्रमाद में चले जाएं तो हमको कॉशन करे कि हम प्रमाद में ना जाएं। और इस तरह से वहाँ उस सूत्र को पढ़ें तो और डिटेल में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उसमें माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, फ्रेंड्स के प्रति कैसा रहना चाहिए, हमारे जो सुपीरियर्स हैं उनके प्रति कैसा व्यवहार हो, वो सारी बातें काफ़ी डिटेल में दी गई हैं। So how do I know if samadhi is the right way for me or pragya is the right way for me? And is there a way to know that there's time for me to give up everything and just follow single-pointedly the path to lasting peace? ก็การโยมอันดับหนึ่งอยากจะขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้มีการสนทนาธรรมแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นความสงบยิ่งที่โยมแสดงออกถึงการกตัญญูเราขอถามสำหรับตัวเองก็เขาจะรู้ได้ลักษณะไหนว่าเหมาะแก่ท่านการปฏิบัติหาความสงบแบบสมาธิหรือหาความสงบแบบปัญญาแล้วอีกคำถามหนึ่งว่าเขาควรจะกำหนดว่ายังไงว่าถึงเวลาที่จะสละสิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ดำเนินทางแห่งสู่ความสงบเมื่อไหร่อันนี้มันเป็น เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติการฟังเป็นส่วนหนึ่งของ
เครื่องประดับความรู้นะแต่การปฏิบัตินั้นมันเป็นเรื่องเดียวกันก็ว่าได้นะเรื่องสงบจิตสงบกิเลสสงบด้วยปัญญานะแล้วมันเป็นไวยพจน์หรือมันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันนะมันมีคุณค่าทั้งสองอย่างนะแต่ว่าอย่างหลังนี้มันเป็นสเต็ปที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นนะแต่เบื้องแรกนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ให้อานิสงส์ให้คุณค่าแก่จิตใจได้อย่างดีที่สุดแล้วล่ะเนี่ยที่เราพูดภาษาปฏิบัติเรียกว่าเป็นสมถภาวนาสงบจิตนะสมถภาวนาก็คือว่าทำอารมณ์ให้มันน้อยให้มันเหลืออารมณ์หนึ่งเนี่ยถ้ามันสงบได้ลักษณะนี้ก็เป็นความสุขที่หาได้ยากแล้วเนี่ยแต่ความสุขอันนี้มันเป็นปัจจัยต่อความสงบกิเลสคือสงบด้วยปัญญาเนี่ยหรือจะพูดภาษาให้ไพเราะตามภาษาธรรมก็หน่อยก็ว่ามันเป็นเรื่องของวิปัสสนาปัญญาเนี่ยซึ่งอาศัยสมาธิเนี่ยก็คือความสงบจิตนี่แหละเนี่ยอาศัยตัวนี้เป็นการพัฒนาไปสู่ตัวปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาซึ่งอาศัยสมาธิตรงนี้เนี่ยถ้าสมาธิขั้นแรกนี่มันได้ดีมันสงบดีเนี่ยเมื่อพัฒนาไปสู่ปัญญามันก็ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยคือมันไม่มีสิ่งรบกวนมากเนี่ยมันเป็นสมาธิพิจารณาเรื่องไหนมันก็ไปเรื่องนั้นมันไม่มีเรื่องอื่นมาแทรกเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นสมาธิเพื่อเป็นปัจจัยไปสู่ปัญญาหรือวิปัสสนาปัญญาเนี่ยมันจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันคงไม่ต้องแยกกันนะถ้าพัฒนาไปถึงขั้นหนึ่งมันจะเป็นตัวปัญญาเนี่ยแต่เบื้องแรกมันจะเป็นความสงบความสงบก็เป็นความสุขที่เราสามารถที่จะมาหลบอยู่ตรงนี้ก็ได้นะอันนี้มันควรจะเป็นสำหรับคนที่วุ่นวายอยู่กับโลกเนี่ยถ้าจะให้อุปมาก็เหมือนว่าความสงบจิตนี้มันเหมือนกับที่พักเราอยู่กลางแดดกลางแจ้งเนี่ยร้อนทำงานตากแดดตากฝนเนี่ยถ้าเรามีร่มเนี่ยก็เรียกว่ามีกระหน่ำมีกระต๊อบเถียงนาเนี่ยปลูกไว้หน่อยมันก็ดีกว่าเนี่ยเวลามันร้อนเรามาอยู่พักสบายเลยพอสบายแล้วไปทำงานก็ได้ทำแล้วก็มาพักก็เหนื่อยเนี่ยถ้าแบบหนึ่งไม่มีนะอย่างโยมเนี่ยคุกคีอยู่กับโลกอย่างดังที่พูดเบื้องต้นนะมันมีโอกาสที่จะให้เครียดนะคือมันตายก่อนงานจบเหมือนกันแต่จะทำงานทางโลกให้มันจบแต่เราตายก่อนงานทางโลกมันไม่จบแต่ถ้ามีเถียงนาหยุดพักให้มันได้คิดเราจะเอายังไงดีเนี่ยเราจะไปทางไหนดีงานนี้ใช่หรือเปล่าใช่ที่พึ่งของเราจริงหรือเปล่าเนี่ยพอได้พักมันได้คิดพอได้คิดทำให้เกิดปัญญานี่มันจึงดีลักษณะนี้So being in this initial phase of practice, it's very legitimate to use the listening and the understanding and in both ways and practice accordingly. But generally, I think Luang Por Jundee said like the peace that comes leads to the peace leads to freedom from kilesa, or the peace that is based in panya, and the peace that is coming from the one-pointed mind of samadhi. They are mutually nourishing each other. They're kind of like epithets of each other. And initially, Luang Por says it's maybe important to start
making the mind peaceful with samatha bhavana, to reduce our confusing mind states a little bit, and to let go of our confusion and be in a different state of engagement, where we can easily focus and easily find a foundation to contemplate and use panya, use wisdom. So we use the peaceful mind or the samatha bhavana as a foundation for vipassana, and we can say vipassana or the panya way depends on a certain amount of samadhi and a certain amount of a peaceful mind, because if vipassana panya is supposed to arise, we need an initial sense of focus to be able to easily develop vipassana, because one can easily focus on the objects of contemplation or the objects of that give rise to panya. One can clearly see these things if one has a focused mind. But generally there is no need to separate the two from each other. They work together very well. You can see it a little bit like in this in a little idiom that Luang Por Jundee gave. Like it's to dwell in a peaceful mind is like when you're out in the paddy fields working hard in the sun and the heat and the rain. If you have a little resting hut, a little bamboo thatched little hut, even though it's just a little hut, you have a temporary shelter, and then you can go back to do your work with a strengthened mind and body after having kind of like gathered your energy in this little shelter, the little bamboo hut in your paddy fields. And for all of us that are, as Luang Por was observing, quite immersed with like the busyness of the world and the duties of the world, it is very important to have a little resting place and a little shady, peaceful shelter, because otherwise, like if you want to work on the real issues all the time, or like work even in a worldly way all the time, you might be dead before you finish your work. So like it's better to have a little rest and gather the energy, and have a little bamboo hut there, and you can think it over and then come out refreshed, and then use your wisdom. And Luang Por Jundee said then wisdom can easily arise. आपने प्रश्न किया था कि कोई साधक कैसे पता करे कि उसको समाधि का अभ्यास करना चाहिए कि पन्या का अभ्यास करना चाहिए। तो आपने उत्तर दिया कि हर शुरू के फेज़ में जब हम साधना शुरू करें तो दोनों ही तरह से करना आवश्यक होता है। जो क्लेशों के शमन से जो शांति मिलती है वो ज़्यादा स्थिर रहती है, लेकिन जो समाधि के अभ्यास से समथ भावना से मिलती है वो भी उसको सब मदद करती है। दोनों एक दूसरे को रिइंफोर्स करते हैं। सामान्यतः शुरू में समथ भावना की जाती है ताकि जो मन के बेचैनी है, बहुत इधर उधर श्रृंखलता रहती है, वो कम हो जाए और हम मन को फोकस कर सकें, और फिर उस फोकस्ड माइंड से हमारी पन्या की डेवलपमेंट या विपश्यना की डेवलपमेंट का आधार बनती है। और उस आधार के आधार पे ही हम अपने चित्त के अंदर होने वाली उथल पुथल को ठीक से देख पाते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं। तो इस तरह जो समाधि और प्रज्ञा है वो दोनों एक दूसरे को साथ काम करती हैं, उनको हमें अलग अलग नहीं देखना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे उन्होंने कहा, जैसे हम किसी एक फार्मर होता है, किसान है, वो पैडी फील्ड में काम कर रहा है, तो अगर निरंतरता से काम करता रहे तो संभव नहीं कि वो धीरे धीरे बहुत एफिशिएंसी कम हो जाएगी, बीमार हो जाएगा। तो वहाँ पे एक हट भी होती है और बीच बीच में वहाँ जाकर टेम्परेरी शेल्टर में विश्राम करता है, आराम करता है। और सांसारिक ड्यूटीज़ से भी इसी तरह से हमें विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, और फिर विश्राम करके फिर हम उस काम में लग जाते हैं। इसी तरह से समथ भावना से हम मन को थोड़ा विश्राम देते हैं और फिर इन्वेस्टिगेट करके मन के जो क्लेश हैं वो हटाते हैं और गहन शांति की तरफ बढ़ते हैं। There was this last portion of your question which I haven't really เขาก็มีคำถามที่พ่วงกันคือเมื่อกี้เรารู้ได้ยังไงว่าเราถึงเวลาที่จะสามารถละสิ่งต่างๆเพื่อจะไปทางตรงครับ
ถ้าปัญญาเกิดขึ้นแล้วนี่ก็ไม่ต้องสงสัยแล้วถ้าปัญญาเกิดขึ้นจากหนักรู้จักเบาเนี่ยนี่ถ้าปัญญาคือแสงสว่างมันเกิดขึ้นโดยอาศัยสมาธิมันมองเห็นแล้วนะถ้ามันมาอยู่กับตัวแล้วเนี่ยมันไม่วอกแวกแล้วมันมองเห็นมันจะรู้จักว่ามากรู้จักว่าน้อยถ้ารู้จักมากจากน้อยมันก็จะทำมากให้มันน้อยได้ทำหนักให้มันเบาได้นั่นคือตัวปัญญาเนี่ยตัวปัญญาถามตอนนี้มันก็ยังไม่รู้หรอกจนกว่าจะรู้เห็นด้วยตนเองเข้าไปตรงนั้นมันจะเข้าใจเนี่ย Okay. So about the question, when one knows when it's time to say go without any reservations to the path of peace and leave things behind. Luang Por said it's a question of wisdom arise first, work and now getting to that state of wisdom, then there won't be any worries. It'll teach you by itself. If you have reached a certain level of wisdom, it will show you the way. It's like shedding a light on the way. There's no real point in determining before that level of like understanding or discernment that when would be the time, because it is apparent when you have an understanding of what is heavy. You understand what's heavy, then you also know how to lighten it. And when you know how something is big, and you understand what bigness or like what this is, then you'll be able to reduce it. That it reveals itself and it suggests itself one time. So don't worry thinking ahead of time. दूसरा उसका प्रश्न का पार्ट था, क्या कुछ कर सकें कि कौन सी मार्ग पे हमें चलना चाहिए। कि जो जैसे जैसे होती है विजडम अराइज होती है तो उस पे हमें स्पष्ट दिखने लगता है कि कैसे कि तरह से काम करना चाहिए। समय से पूर्व संभव नहीं है, क्योंकि समझने के आराम पे ही हम जो चीज़ भारी है दूसरा समझ जाएंगे कि दूसरी हल्की है, और उसके लिए पहले से ही डिसाइड करना वो शायद उचित नहीं होगा। जैसे जैसे प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी वैसे वैसे स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सी भावना हमें करनी चाहिए। One more question. My question is personal. I had an experience. I was having too much attachment, which was disturbing me. Then I investigated and found that I was having both in my hands, positive as well as negative. On one hand, I was holding the attachment, to leave that attachment. I cried. On the other side, I was seeing the plain ground, very light. And at that very moment, I was very much mindful. But since I cried and I thought that if I my attachment, nothing will be in my hand, how will I survive in this world? But at that very moment, being mindful, this thought came in mind that after all, when I have to be detached, I have to go through all these things. I have to leave this. Now my question is, when I meditate, oftenly I doing household activities, I try to concentrate on breath and thoughts and sensations. But I am not satisfied with that only. The investigation part was done only once when I had a very much attachment problem. Now the question follows, when investigation should be done for me? Because I am not satisfied. I observe
thoughts, sensations. I know this is changing. I am observing breath, involving myself almost all the time, but not satisfaction is not there. I find something is missing, and that is change. I don't know when to clarify on this. ประสบการณ์ส่วนตัวก็เคยมีประสบการณ์ว่าเคยยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปจนถึงเป็นที่รำเขาได้มีรู้สึกว่าเขายึดมั่นจนถึงอยากจะร้องไห้แล้วในที่เดียวเขาก็เห็นว่าที่จริงก็เป็นการเล่นเขาน่าจะให้มีอารมณ์เบาๆบ้างแต่เขาก็ช่วงนั้นเขาในการต่อสู้ระหว่างความคิดแบบนี้ก็มีความรู้สึกว่าฉะไหนเนาะฮะว่าเราปล่อยสิ่งต่างๆเราจะไม่มีอะไรที่จะถือไปต่อไปเราไม่มีปัจจัยที่จะอยู่ต่อในโลกนี้จะทำยังไงก็อันนี้เป็นประสบการณ์ที่รู้สึกว่าลึกของเขาในที่เดียวเรื่องการภาวนาปัจจุบันเขาพยายามทำตามที่เป็นการแนะนำเขาก็ดูลมหายใจแล้วก็พิจารณาเวทนาพิจารณาการสัมผัสของสิ่งต่างๆความรู้สึกต่างๆก็พิจารณาตามรูปแบบนี้พอทำได้แต่ก็มันรู้สึกว่ามันคนละระดับกับที่เคยมีในประสบการณ์ที่เราให้ฟังเมื่อกี้ที่เป็นประสบการณ์แบบชัดครั้งหนึ่งแล้วก็เขาจะทำยังไงจึงจะเชื่อมระหว่างการภาวนาที่ทำเป็นการนั่งสมาธิตามรูปแบบกับประสบการณ์ที่ลึกๆที่เคยผ่านมาครั้งหนึ่งให้พิจารณาตรงนี้ที่จะให้มันหากันได้โดยความถูกต้องครับจริงๆมันก็ มันเป็นความแตกต่างของรูปแบบเฉยๆหรอกนะจริงๆการปฏิบัตินั้นมันเชื่อมโยงเข้าไปหากันได้นะการปฏิบัติในการที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะมันไม่ใช่เรื่องเราไปนั่งหลับตาภาวนาอย่างเดียว หรือรูปแบบใดก็ตามการปฏิบัติรูปแบบก็เพื่อที่จะไม่ให้ติดรูปแบบแต่จุดมุ่งหมายของเราคือต้องการละอุปาทานซึ่งมันยึดมั่นหมายมั่นนั้นต่างหากนะจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามนะทำอะไรอยู่ก็ตามจุดมุ่งหมายที่แท้จริงคือตรงนี้นะตรงที่เราจะดับทุกข์นะหรือตรงที่เราจะละความยึดมั่นหมายมั่นนะเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องรูปแบบนะรูปแบบใดก็ตามเพื่อต้องการพัฒนาปัญญาให้มันเกิดขึ้นหลวงปู่ชาท่านอุปมาก็ง่ายดีเนี่ยเหมือนสถาบันการศึกษามันมีเยอะแยะมากมายเนี่ยหลายระดับด้วยนะแต่การศึกษานั้นศึกษาเพื่อให้รู้เมื่อรู้แล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องกลับไปตรงนั้นอีกไหมต้องไปศึกษาตรงนั้นอีกไหมเนี่ยแล้วรู้แล้วเนี่ยถ้ายกตัวอย่างว่าเบื้องแรกเราอาจจะอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยแต่ถ้าเราเรียนหนังสือจนอ่านออกแล้วเนี่ยเมื่อเราเจอหนังสืออยู่ที่ใดเราจะต้องวิ่งไปโรงเรียนแล้วไปอ่านที่โรงเรียนนั้นเสมอไปหรือเนี่ยไม่ใช่ว่าพอได้หนังสือแล้วต้องวิ่งไปโรงเรียนก่อนถึงจะอ่านได้แต่จุดมุ่งหมายคือเมื่ออ่านได้แล้วเนี่ยเจออยู่กลางทางก็อ่านมันกลางทางเจออยู่ในป่าก็อ่านได้ในกลางป่าเจออยู่ในบ้านก็อ่านได้ในบ้านดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรเนี่ยแต่ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้อาศัยรูปแบบถ้าอาศัยรูปแบบจะยุ่งยากเหมือนวันนี้มาจัดใช่ไหมถ้าเราจะคิดว่าได้ทำสมาธิภาวนา3 วันนี้ดีนะแต่พอครูบาอาจารย์นี้ไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีรูปแบบเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าถ้าเรียนรู้แล้วเนี่ย
เอาไปปฏิบัติทุกที่ทุกขนทุกแห่งเนี่ยเหมือนหลวงปู่ชาท่านว่าพระอ่านหนังสือได้แล้วนี่ยืนอยู่ก็อ่านได้นั่งอยู่ก็อ่านได้นอนอยู่ก็อ่านได้เดินอยู่ก็อ่านได้เนี่ยนั่นคือจุดมุ่งหมายเนี่ยอย่าไปติดในตรงนั้นเนี่ยจุดมุ่งหมายของเราคือทำอย่างไรที่จะให้มันละอุปาทานหรือละความดับทุกข์หรือละความยึดมั่นหมายมั่นนั้นนั่นคือมองถึงจุดมุ่งหมายคือปัญญาเราจะได้ไม่ไปยุ่งยากกับสิ่งนั้นถ้างั้นมันจะยุ่งมันยุ่งเนี่ยนี่ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะง่ายนะ Okay. So Luang Por says this is just the difference or the difficulty is in joining between the formal meditation and the real experience that you had and went through. This is a difference of the formal way of practice, but of course you can join the formal ways of practice with the real experience, and it's very important to keep in mind what the aim of our practices are. Like it's like there's various techniques and various methods to come to terms with attachments or the various cravings, and we use the method of letting go, and eventually this very strong feeling of wanting to let go is independent from the technique, or independent from whether you're sitting and doing a meditation exercise. So it's not so much the question of optimizing the meditation exercise in order to arrive back at this very strong experience of wanting to let go of attachments, but rather to keep the mind or the spirit of this letting go and this feeling of wanting to abandon the attachments and desires with you, and use it in every posture, and then naturally it will join to your meditation in the formal way. Luang Por Chah gave a simile about this, how to not be concerned about the external form in the process of learning something. And he said it's like there's so many educational institutions like schools and universities and so forth. They teach you good things, and you go there, and once you have the knowledge, like you've understood what they teach you, say for example when you go to school and you pass primary school, you're able to read. So then it's not necessary to go back to the method that the teacher told you how to read, and you just use the book and read it, and whether you're on the way to the school or not, or what, you don't have to just go back. You go back, carry the book to school and read it there. You can read it on the way, in the forest, in your house, wherever you are. You'll be able to read. So when there's nothing there that you need to hold on to in the practice, then you don't need a particular form. So you have to keep this in mind, that like the aim of the practice is to not to use a certain technique or a certain form, but the aim of the practice is to develop this knowledge and how to abandon attachment. And if you have an inclination towards knowing this, and then you use it from this angle, and it will connect to the various techniques that people suggest you naturally. And you can keep this like aim of developing knowledge or wisdom of letting go in your mind, and then everything, the way to relate this to your practice will become easy, because you're working from this from the actual aim of like abandoning this. आपने एक प्रश्न पूछा था व्यक्तिगत कि ऐसा एक बार अनुभव हुआ कि मुझे स्पष्ट हुआ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है और कि मुझे छोड़ना चाहिए, लेकिन एक मन का हिस्सा ये भी कह रहा था कि नहीं छोड़ेंगे तो मेरे पास संसार में कुछ नहीं रह जाएगा, तो मैं क्या करूँगा क्या करूँगी। तो
पर मैंने कोशिश की उसको इन्वेस्टिगेट करने की, तो कुछ थोड़ा बहुत मालूम पड़ा, लेकिन अभी ये समझ नहीं आता कि किस समय मैं इन्वेस्टिगेट करूं और किस समय मैं आनापान करूं या वेदनानुपश्ना करूं या चित्तानुपश्ना करूं। तो कृपया ये बताइए, क्योंकि अभी भी मैं अपनी साधना से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे लगता है कि कुछ कमी है, और यही लगता है अब तो कि इन्वेस्टिगेशन की कमी है, लेकिन ये नहीं समझ आता कि किस समय मैं जिससे साधना मैंने सीखी है वैसे करूं और किस समय मैं इन्वेस्टिगेट करूं। लुंगपोर ने समझाया कि हमको फॉर्मल जो हमारी सीखी हुई प्रैक्टिस की टेक्निक्स हैं और जो रियल अनुभव है उसमें आपस में सामंजस्य बनाना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम ये स्पष्ट हो कि हमें चाहते क्या हैं साधना करने से, हमारा लक्ष्य क्या है। साधना के कई तरीके होते हैं, लेकिन एक लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य ये है कि जो भी कठिनाई है, जो भी तृष्णा है, जो भी अटैचमेंट है, उसको छोड़ना है। उसको भी छोड़ना इन द सेंस कि उसके साथ चिपकाव को कम करना है। तो उसके लिए हमको अपनी साधना विधि को और गहन बनाने की, उसको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको अपने मन के अंदर ये बात सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम अटैचमेंट को छोड़ेंगे। और वो काम सिर्फ फॉर्मल मेडिटेशन में नहीं, सामान्य जीवन में हर क्षण में, प्रति क्षण ये बात लागू होती है। लुंग पोर चा भी इस बात को बहुत महत्व देते कि उदाहरण के तौर पर समझाते थे कि जो साधना की विधियां हैं, जो एक्सटर्नल फॉर्म्स हैं और जो सचमुच में उसका साधना का उद्देश्य है, उसको किस तरह से सामंजस्य बिठाना चाहिए। तो एक उदाहरण से देते थे कि जैसे हम पढ़ने जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में, सीनियर स्कूल में, फिर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। तो जब हमने प्राइमरी स्कूल में कुछ सीख लिया और फिर हम उसको दोबारा पढ़ना चाहते हैं, तो हमें फिर से स्कूल जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसको बस में बैठे हुए भी, चलते हुए भी पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से हमको एक पर्टिकुलर टेक्निक जो हमने सीखी थी किसी उद्देश्य के लिए, उसको ग्रहण करने के बाद हर समय उसी के को दोबारा से याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है वो हमारे सामने आना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि हम प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। प्रज्ञा प्रतिष्ठित करने के लिए आवश्यक है कि हम चिपकाव को, उपादान को कम करें। तो उस बात को अगर हम प्रमुख बनाएंगे तो अपने आप हमारी साधना की विधियां उसके अनुरूप ढल जाएंगी। हमें उसके विधि के अंदर न पड़ के जो उसका ब्रॉड एम है, मुख्य उद्देश्य, उसको महत्व देना चाहिए।